it's in our ad films, our music, or our lyrics. And of course, our films. The other commonality, of course, happens to be that they are siblings. So, taiyar ho jaiye for some pandemonium. Let's welcome on stage Piyush Pandey, Chief Advisor, Ogilvy. A very warm welcome, sir. A legend in the Indian advertising industry. Let's also welcome Persoon Pandey ji, Advertising and Film Director. And a huge round of applause, please, for the one and the only Arun ji, actor, singer and writer. आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है on the stage of Ideas of India, and once again I'd like to welcome on stage Veer Sanghvi as the chair of this session. I think we can have a warmer reception for such wonderful guests. Please join us on stage. Please join us on stage. बदलो इसको भी नहीं पहले लगाऊंगा म्यूजिकल चेयर. Ladies and gentlemen, welcome to this session. I've never done a family session before, but it's really a privilege to do a session with a family as famous and as talented. We're supposed to be talking about the ideas of India, so let's start with that. What is your idea of India? Microphone? This is your mic. Yeah, first thing, Veer, I want to say is कि मैं आधे घंटे से यहाँ बैठा था. हाँ. तब की बार पॉलिटिक्स मत पूछना यार. अरे बिल्कुल नहीं. But you tell me about your idea of India. Idea of India. See, I think we don't have to have an idea of India. India is an idea. That's a good line. If you look at anything that we do, every field that we look at, India is an idea. But a lot of our young people are busy looking at ideas elsewhere. वो हिंदी में एक कबीरदास की कहावत है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही. एंड वही हो रहा है आजकल कि आपके अंदर बहुत जादू है, मगर आप यहाँ वहाँ ढूंढते घूम रहे हैं. दुनिया आपकी तरफ देख रही है. दुनिया आपकी तरफ देख रही है हर तरीके से. आपकी हिस्टोरिकल उसमें क्या चीज़ें विज्ञान में भी थी, क्या चीज़ें ज्ञान में भी थी, क्या चीज़ें कला में भी थी. तो आई थिंक वी हैव टू एंजॉय द आइडिया ऑफ इंडिया, वी हैव टू रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, and we have to cultivate the idea of India into the next generation. So my idea of India is that India is an idea. That's well said. Is that roughly your view also? That India is an idea and our job is to nurture and cherish that idea? Yeah, I think India is really, you know, when I look at our family, I feel India is exactly like our big joint family. You know, we are about 43 people, okay, in the family. And you need to enjoy, हर आदमी का एक अलग रंग है. Okay, so we've got 43 people, each person has a different color, a different thing to learn from. And you know, we've got Maharashtra, we've got UP, we've got Rajasthan, everything in Kashmir, and we've got Firangis also in our family. Okay, and you learn from everybody. They enrich your life experience. And they of course enrich your food experience too. Okay. And I think the country is a bit like that. Okay. Just everywhere, you know, why she was saying our ideas are rooted in the country. They are, because I doubt if any other country has that rich a culture all around us. Okay? A tapestry. Really. Yeah, a tapestry. That is what we need to appreciate and enjoy and cherish it. That's very true. Okay, your brothers have said so much that's interesting. What do you add to that? बहुत कम होता है कि भाई लोग अच्छी बात बोलते हैं, खुल के बोलते हैं. उन्होंने सब बात कह दी, पर मैं उस युग से हूँ जहाँ एकता में अनेकता, एज प्रसून सेट, कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो पांडेमोनियम कहलाता है. तो हम कहाँ से बड़े 9 सिबलिंग थे, अब 45 हो गए, और हर प्रांत के लोग हमारे घर में आ चुके हैं.
तो एकता में अनेकता, यही एक आइडिया है जो भारत का खुद का है, जो हमारी माँ ने हमें सिखाया था जब आज़ादी के बाद की हम लोग पैदाइश हैं, पर उन्होंने यही बताया था सबका सम्मान करो। अब वो जो क्लीशे लाइन हो गई कि सबका साथ सबका विकास, पर ये बात सही है, सबके आइडियाज़ को लो, सबकी भाषा को प्यार करो, प्रेम से बोलो, और इतना कुछ है कि अपनी रूट्स को पकड़े रहो, आगे बढ़ने के साथ जड़ों से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है, और अपनी भाषा से अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत आवश्यक है, तब भारतवर्ष खिलखिलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। Very well said. Very well said. You guys grew up in Jaipur, right? Tell us a bit about your childhood, because you were how many sisters and how many brothers? 7 sisters on top. And just these And two guys. two of us. Just two And of if you you, right? include my parents, then we were 11. That's a cricket team. So we had the strongest cricket team in Jaipur, I think. No, jokes apart. Seriously. Being brought up in Jaipur was actually the greatest thing that happened to us. It was a smaller city than you know today. Yeah. The schools were smaller. We're talking about which years? 80s, 90s? I'm 1955 born. So, Okay, so yeah. so शहर छोटा था, स्कूल छोटे थे, मोहल्ले छोटे थे, घर परिवार में रिश्ते मजबूत थे। तो अगर आप जयपुर में होते थे, कई बार आपके टेबल पे, हर एक के घर में अपने सबके टेबल पे एक दाल होती है। तो मैं एक बार जयपुर गया तो मेरी टेबल पे 2 दाल थी। तो मैंने अपनी माता से पूछा ये 2 दाल कैसे हैं? तो बोले नहीं, वो जो अपना पड़ोसी है ना उसको मालूम है तुमको उनकी दाल भी पसंद है तो 2 दाल हैं। नो, ऐसी चीजें नहीं होती हैं आजकल। तो किसी के घर में शादी भी होती थी तो आपका घर भरा हुआ होता था कि उसने अपने 10 रिश्तेदार आपके यहाँ भेज दिए थे कि वो आपके यहाँ रुक सकते हैं क्या। एंड इसमें कोई डिबेट नहीं होती थी, इट वॉज एन ऑब्वियस थिंग। तो उसमें पैदा होना, उसमें बड़ा होना, उसमें दोस्तियां बनाना, उसमें रिश्ते बनाना, और उसी बीच मैं तो क्रिकेट खेल रहा था तो उसमें पूरे भारतवर्ष को सेकंड क्लास कंपार्टमेंट से देखना और भारतवर्ष से सीखना, वो मेरे लिए जयपुर की सबसे बड़ी देन है। एंड दे कैन ऐड टू इट। That's true. I remember, I'm his generation, so I remember Jaipur in those days. It was a fairly provincial, quiet, very civilized and quite pretty town. I was in school in Ajmer, so what, 80 miles away from Jaipur. So I used to go to Jaipur a lot. But what strikes me about all of you is that you came from what was then effectively a small town, though it's a big city now. Yet you guys came to Bombay and you conquered Bombay. You brought a national vision to everything you did. How did that happen? That I don't know at all. But we really appreciated the environment that we were brought up in, and we did not let that go. That is, we are only a product of the way we were brought up. You know, And how were you brought up? You know, okay, I was the last, first 7 sisters came, then Piyush came, and then I was an afterthought. So you're the youngest? I'm the youngest. Okay, I look it, no? So yeah, you do too. So by the time I came into the family, my mother had created the world's best art school for me, because my older sisters, somebody was learning painting, somebody was learning sitar, somebody was learning singing, somebody was doing theater, and that is the environment you're growing. It's all happening all around you. You can't, so by the time I went to NID, I thought, ab aur kya seekhna hai? Okay? And I think there is a great joy when you are all together. I think the thing that is missing now, we are giving our kids separate rooms and stuff like that. We did not have that. हम लोग ऐसे गद्दे एक छत के ऊपर इधर से उधर तक सब गद्दे लग जाते थे, सब वहीं पे सोते थे। पहले छत पे जाओ, शाम को 5 बजे पहले उस पे छाटे दो ताकि वो उसकी गर्मी निकल जाए। वो काम हम लोग का होता था। फिर when you sleep on the terrace and you can see the stars above, it is the most enriching time, because it's not like you go there और एकदम से सो गए। अभी सबकी बातें हो रही हैं। You are like the telephone operator who can hear what this sister is talking to my mother and that sister is talking to, and in that is a huge learning.
Yeah. And all that has got captured somewhere in our heads, and we are only drawing on that material that is inside and producing it as commercials, and people say, oh, मेरा idea नहीं है, वो देखा था मैंने, ये मैंने सुना था, and I'm just putting a frame around it, and I'm saying, just watch it. So it's that well of experiences that you keep drawing from. True, true. Yeah, it's interesting. You have made a name for creating a new milieu for folk arts, for folk music, all of that. Did that come from your childhood or was it an interest later? नहीं, कान तो थे मेरे Yeah. जो अच्छा सुनते थे, पर वातावरण जो था वो राजस्थान में मौजूद है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे घर में, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि बड़ी फैमिली थी, तो एक ही साथ साल भर का गेहूं आ जाता था, तो उसको बीनने के लिए जो गांव वाली आती थी, वो उस काम की बोरियत को मिटाने के लिए गाती थी, और हम लोग उनके पास बैठ जाते थे। एक आप तीनों, आप कौन सी स्कूल से हैं? अजमेर मेयो कॉलेज। अब कुछ भी कह लीजिए कि आप जड़ों से जुड़े हैं, ये जेवियर्स के हैं और मेयो कॉलेज के हैं, और मैं हूँ महाराजा मल्टीपर्पज हाई सेकेंडरी स्कूल। मेरा म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल था, तो मैं जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं, मेरी दोस्तें कोई हसीना, कोई नफीसा रामगंज बाजार से आती थी, और ये जो लोकगीत हैं, ये जो साधारण जीवन है, वो ड्राइवरों से सुना। आई ऑलवेज डेडिकेट माई लाइफ टू माई, उस समय के जो हेल्पर थे रघुनाथ, बड़ी बड़ी मूछें उनकी थी, साइकिल पे ले जाते थे, जिस तरह से वो गाते थे, तो ये सब कुछ अनजाने में हमारे अंदर चला गया। अब ये है कि बच्चे 9 जो थे, उन्होंने जो कुछ राजस्थान में था अपने अपने तरीके से लिया। कोई कहता है कि आपका बिंदी का स्टाइल पसंद है, कोई कहता है आप सिल्वर पहनती हैं, पर मैं किसी डिजाइनर के पास तो ना गई। मैंने तो वही देखे कि फैंसी ड्रेस में हम जाते थे महाराजा मल्टीपर्पज हाई स्कूल में, तो रामनाथ मीणा की वाइफ के लहंगे और कुर्ती कांचली पहन के हम फर्स्ट प्राइज लेके आ जाते थे। तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, और यही मेरा सबको कहना है कि कल्चर से जुड़े रहोगे। यू डोंट नीड एनी डिजाइनर, यू डोंट नीड, जितने भी फेस्टिवल राजस्थान में होते हैं वो गाने के बिना होते ही नहीं। भीख गाने के बिना मांगी नहीं जाती, मौत गाने के बिना होती नहीं। मैंने शायद जाने अनजाने उसे पकड़ लिया, और उसी ने मुझे लौटाया जो कुछ था। तो इस तरीके से हो गया। तो मध्यम वर्गीय घर में पैदा होना, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में जाना, ये भी अपने आप में ईश्वर की एक देन है, जहां आप अपनी सच्चाई से परे नहीं होते, सच्चाई से जुड़े रहते हैं। आज जैसा प्रसून ने कहा, पीयूष ने कहा कि बच्चों को अलग अलग कमरे मिल रहे हैं, हमारी तो कबर्ड भी नहीं थी, हम तो एक ही टेबल पे पढ़ते थे। और आप मानेंगे नहीं, मैं आज भी ये आदत पड़ गई है कि चाहे आपको राइटिंग टेबल हो, मेरे पास है नहीं, मैं बहुत कुछ लिख रही हूँ, बहुत कुछ पढ़ रही हूँ, उसी डाइनिंग टेबल पे काम होता है, क्योंकि बचपन से वही देखा है। तो ये जो वैल्यूज आप कह रहे हैं। और एक चीज और मैं कहूंगी कि माँ ने सबको सिखाया था कि फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका रहता है। ये वैल्यूज हमने उनसे पाई। या हाथ ऐसा मत करो, ऐसा करो, मतलब मांगो मत। कभी कभी जाते हैं स्पॉन्सरशिप मांगने पर, वैसे ऐसे। You're at the, don't be modest, you're at the top of your profession, not just at an Indian or an Asian level, but probably at a world level. Yet the one thing everybody says about you when they talk about you is how open you are, how unpretentious you are, how you have no snobbery, how you talk to everybody the same way. Is that a product of your childhood, of growing up? Yes, it is. Yeah, explain Yes, that. definitely it is. That I started off by talking to you about cricket. Yeah. I think this is what I share with everyone here and abroad in every forum, that even a Brian Lara could not win a match for West Indies. No matter how good you are, you can't. So you ought to have a great team, and that's what I talk about, that I'm not a single Piyush Pandey. There are so many people working with me, around me, helping me, right down to the man who gets me a cup of coffee at 2 o'clock at night when I'm writing an ad for Fevicol. Each one is a contributor. Yeah. So it's not a lie, or it's not a style that I try and project to the world. It is the truth, a truth that most people do not want to accept. A lot of people want their name there. It's not true. It's not true that you are the only contributor.
I still remember I once spoke to a senior person in my company. In a presentation, it was a line which everyone used, that kind of line, and said, we made the brand Titan. So I asked that person, so did you make the watch? He said, no. I said, did you design the watch? He said, no. I said, did you make the shop where they sell Titan? He said, no. I said, then change this line in your presentation to say, I am fortunate to be a part of a team which made the brand Titan. And that's what we say. But does that sense of people all in it together, being a team rather than being individualistic, come from growing up in a large family? I should think so. I think because we were all together and we learnt the strength of camaraderie. Yeah. Okay. And we realized, I think inadvertently, we realized कि ये सारी चीजें, art is a collaborative art form. Yeah. You know, कहाँ से किसने क्या बोला था, उससे मेरे दिमाग में क्या आया, उसको किसी ने कैसा पॉलिश किया, and you need to respect that. If you stop respecting it, अगली बार नहीं बोलेगा वो आपके सामने. ठीक है? So you need to honor each contributor so that they get encouraged to talk more, to express themselves. And we are just lucky that we are in the position that we are in. No, you're not lucky. You have talent and you worked hard for it. Veera, I just want to add something out here because I remembered something. Some 7-8 years back, I got a Lifetime Achievement Award in New York. Yeah. And they wanted you to give an AB, and he made the AB for me. The AB was all common people, halwai, shalwai, or everyone, and they're just saying, "Yaar, wo to mera idea hai. Why are you giving an award to him?" The entire thing is, why give an award to Piyush? It's my idea, because I picked up my ideas from general life. In India, most of the Fevicol work you have seen is from the streets of India. You almost get the feeling that I've seen it myself. So isn't that, in a sense, you guys share that idea of India, which is that India is its people. All of us contribute, never feel we are greater than the people. I couldn't agree more with you. Everyone has got a beauty within him or her. Pick it up from there. Why are you going somewhere else looking for it? There is magic in this country, and enjoy it and cultivate it. You know, did you realize when you were growing up in Jaipur, now when you go abroad and people talk about Indian culture and they talk about Churu prints or Sanganeri prints or whatever, so much of what passes for Indian culture abroad is Rajasthan, is Rajasthani culture. Did you realize then how privileged you were to grow up in that state? Definitely. आज जहाँ भी मैं हूँ राजस्थान की वजह से हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो हमारे गुजराती भाई हैं, राजस्थानी भाई हैं, जो भी हैं, पंजाब से कहीं भी हैं, वो कल्चर के लिए तड़पते हैं. और जब वो मेरे गानों को, मैं 3 जनरेशन अभी भी बाहर किसी से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके रेशम के रुमाल गले पे डाल के करती हूँ. कोई कहती है नानी करती थी, कोई कहती है दादी करती थी. तो इससे खैर मेरी एज तो बढ़ती जाती है, बट उसको भूल जाइए आप. पर मैं ये कहूँगी, मैंने कहाँ से सीखा? ये सब राजस्थान में जड़ों से आप जुड़े रहेंगे, आप सीखेंगे. फेस्टिविटी में इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. हम डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं पर बुलाते डीजे को हैं, हम बुलाते हैं बॉलीवुड को है. तो कैसे होगा? मेरे जो भी प्रोग्राम बाहर होता है, सब लोग गवाह हैं कि मैं कुछ भी कॉस्ट बढ़े, लंगास को, मांगनियार को, उत्तर प्रदेश के फोक गायकों को, इनको 15-20 मिनट जरूर देती हूँ. क्योंकि मैंने प्रेरणा कहाँ से पाई? उनसे पाई. तो पहले मैं श्रद्धांजलि उनको देती हूँ. और कई बार वो आके कहते हैं, भाई साहब उनकी भाषा नहीं समझ में आई, अपना जरा फिल्मी सुनाइए. मैं कहती हूँ नहीं, उन्होंने मुझे जबान दी है, उन्होंने मुझे आत्मा दी है. तो फोक तो भारत के किसी भी, चाहे मणिपुर ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, कोई सा भी स्टेट लीजिए, भारत की धड़कन अगर गांव है तो आत्मा उसकी जो है वो लोक संगीत है. और वो हमारे यहाँ है. और बाहर के लोग भारत को इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ आपको प्लेटर में हर प्रांत में मिलता है. True, very true. I'm intrigued by the fact that you guys came from a smallish town
well, not so small, but basically a small town, a bit of a backwater. You came to Bombay, the city of opportunity, full of all these cats and sophisticated characters. How did it feel when you arrived? Did you realize you were going to make it so big? No, that I don't think I've made it big as yet. Okay. Did you realize you were going to make it to whatever you have? But I'll tell you what. Jaipur se aaye. यहाँ पे I was working with Lintas, then they gave me an apartment on Pedder Road, and then I realized, oh gosh, this is a different city because एक maid hire करी, वो maid आई घर पे, उसने मेरा फ्रिज देखा, बोला आपका तो बहुत ही फटीचर फ्रिज है, इसमें वो नहीं है फीचर, मेरे वाले में तो है. So I said, wow, okay. Bombay. And then we, you know, after 3 months, she said, you know, I'm having a baby. We said, yeah, of course, you know, take time off. But वो many बार बाद वापस आ गई. तो उसको पूछा, यार तुम वापस आ गई, वो बेबी का क्या हुआ? बोला नहीं, उसके लिए मैंने मेड रखी है. So yeah, it took us time getting used to this. But you know, coming back to your question, we never saw it like that. We were just doing our own thing and trying to do justice to each piece of work that we were working on. कभी ये सोचा नहीं, we never worked thinking कि इससे award मिलेगा. मिल गया तो बहुत अच्छा है, you know, मिल गया तो बहुत खुश हुए, नहीं मिला तो no problem. As long as people loved it, and that's the biggest reward for all of us when we go, you know, airport पे, you know, you're returning from somewhere. Yeah. And airport पे वो लोग, because we used to, in those days we used to process our films outside and we were shooting on film. So they would always open the cans and they would say कि यार ये क्या film लेके आया, तो उसको पता है हम लोग advertising करते हैं. और जब उसको बोलो कि फेविकॉल कर, बोला फेविकॉल, अरे बहुत कमाल के ऐड होते हैं, मेरे पास भी एक आइडिया है. Now you cannot have a bigger reward than that, you know. So we never focused on awards or वगैरह वगैरह. So your process is what? Somebody comes to you with an idea, says we need this. You do what? You don't worry about awards. What do you worry about? What is your priority when you sit down to create something? Can I do justice to the idea? That's it. That's it. It's single focus. That, you know, sometimes people come to me with an idea, sometimes they ask me to write an idea. But once you have an idea, then the idea is the king. Nothing is more important than the idea. It's unimportant what I like, what I do not like. What does the idea need? You know? I just want to add something before you ask me something. I'll give a logic to everyone to understand. कि 1982 में Color TV came to India with the Asiad. That's when I joined advertising. That was the time when you're going into the homes and kitchens of everyone in India. So Bombay could not confine itself to Bombay. It had to open up to India, and that was what was driving you. And that's what should be driving us today. We cannot live in Bombay and not think of India. Otherwise, we'll be left behind. That's exactly what I was going to ask you. That if you look at the 70s and the early 80s in Bombay, the advertising community was what I suppose our equivalent of Mad Men. There were all these really cool guys and they thought of themselves as being international and all of that. And yet there was this disconnect with the rest of India. There was a sense in which you thought maybe they should establish diplomatic relations with India. And then it sort of changes with you and with people like you. So was that something that happened naturally to you, or did you realize that this can't go on, they can't continue in this island, this bubble? A lot of people changed that time, Veer, because they could not cope with the idea of doing work for people that they had no clue about. That's right. Those people who were living in Ajmer and Kishangarh and small towns of South India, they had no clue. They could only write in English and have a cocktail in the evening and say how good we are. Yeah. So there were 10 people talking to 10 people, and we had to talk to a billion people. Yeah. So that was the difference. I think some of them who were open to change, changed and did very well. But lots of people were caught into their world and they did not. And I think that's what we have to remember all points of time, that you have to keep an eye on the world. Yeah. Need not change your belief in your ideas,
but embrace whatever is going on and see how you can add value to what you know. Like, I'm not a great believer in AI, but I'll have to recognize that a lot of my younger people are. Yeah. They'll have to listen to it and say, यार ये AI क्या होता है? Air India है या कुछ technology है? कुछ समझनी पड़ेगी. Yivaji, I remember meeting you in the 80s and the era of Prithvi Cafe and all of people being into art and being very different from what was happening in mainstream Bollywood. That process changed. Those worlds began to merge. And you were among those people. Things like Choli Ke Piche, etc. were sort of breakthrough moments in the way in which we saw folk music, folk idioms, Bollywood, etc. Were you conscious then that you were there at the forefront of a change? नहीं, मैं जो कर रही थी तो अपना कर रही थी, बिकॉज HMV ने मुझे बुलाया या टिप्स ने बुलाया तो फोक म्यूजिक के लिए, पर चोली के पीछे तो किसी और का क्रिएशन है और उन्होंने ये देखा कि एक नई आवाज़ है, नई आवाज़ की सिनेमा वालों को तलाश रहती है. सबसे पहले मोरनी हुआ था, लम्हे फिल्म का अगर आपको याद हो, मोरनी बागा में बोली, तो वो शिव जी और हरि जी की कंपोजिशन है. उनको अच्छा खासा राजस्थान का फोक, जम्मू का, पहाड़ का सब पता था, तो उन्होंने मुझे पृथ्वी थिएटर कह लीजिए, क्योंकि थिएटर मेरी जिंदगी है, वहाँ से उन्होंने मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया. मैं अनकंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि फोक तो मैंने जिंदगी में जिया है. ऐसे गाने भी सुने हैं जो पारिवारिक शादियों में होते हैं, छेड़छाड़ के गाने होते हैं. तो मेरे लिए तो ये जब लिखवा भी रहे थे आनंद बख्शी, तो एक्सप्रेशन देख रहे थे, हल्का थोड़ी सी सकुचाई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक तो एक्ट्रेस हूँ. सेकेंडली ये हमारे यहाँ गाने होते हैं जहाँ जीजा साली में मजाक होता है या ननद भाभी में होता है. तो मैंने जो भी गाने गाए हैं जिनके नाम आप ले रहे हैं वो मेरी देन नहीं है. वो फिल्म के बड़े बड़े अच्छे लोग, और उससे पहले भी फोक होते थे. नौशाद साहब ने बड़ा इस्तेमाल किया. वाई शुड वी फॉरगेट कल्याण जी भाई, उनको इतना गुजरात का फोक मालूम था, उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया. बीच में एक गैप आ गया था कि बॉलीवुड बाहर से इन्फ्लुएंस हो गया और बाहर का म्यूजिक आने लग गया, पर फोक कभी मरता नहीं. अब देखिए, आप फ्यूजन में चल रहा है, ग्लोबल में चल रहा है. हम फोक को मैं बार बार कहती हूँ कि अपने ही देश में वो इमिग्रेंट हो गए. अब जो हो रहा है वो दूसरों की बैसाखियों पे चल रहा है, पर फोक को किसी की जरूरत नहीं, अपने आप में बहुत प्योर है. और मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, मुझे अवसर मिलते गए और मुझे राजस्थान ने दिया और ये मेरा प्यार है. लोकगीत के मैं आपको कहूँगी कि मैं कई बार 26 जनवरी में भी गई हूँ तालकटोरा गार्डन में, और पूरे भारतवर्ष के फोक को देखने का मौका मिला. तो उनकी पोशाकें, उनकी कितनी रंगीन पोशाकें, कितने कलरफुल हैं, कितने तरह से अपने को अभिव्यक्त करते हैं, ये मुझे ट्रेंड कर रहा था और फिर मौका मिला वहाँ मैंने उन्हें इस्तेमाल किया. The same question I've been asking your brothers, which is when you came to Bombay, Hindi film songs were sung in a certain way, the pitch, the notes were much higher. You introduced a sort of earthiness, a genuineness. Did you realize it would catch on so much and it would make a difference? आपको समय रियलाइजेशन नहीं होता है. आप पे किसी की नजर पड़ी, आप उसकी मेहरबानी पर गर्दन झुकाते हैं कि उसने आपकी तरफ देखा. मैंने कुछ ऐड किया, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, ये वो कह सकते हैं जिन्हें लगता है कि आई ब्रॉट सम डिफरेंस. क्योंकि तब पतली आवाजें चलती थी. आपका कहना सही है कि हीरोइन की आवाज हमेशा पतली है. मैंने तो सोचा कि अपनी रानी मुखर्जी और ऐसी एक्ट्रेसेस शायद मुझे मौका दे जाएंगी जब मैं उनके लिए प्लेबैक कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों की सबकी थोड़ी बैठी बैठी आवाजें, बट बेसिकली पतली आवाजें थी. पर फिल्म को भी कोई ऐसी आवाज चाहिए, जैसे बैकग्राउंड में रेशमा जी जब आई तो एक जब आवाज धूल में लिपटी हुई आती है तो थोड़ा एक फर्क पड़ता है. नई आवाज की तलाश थी, मैं उनकी नजरों के बीच में आ गई. मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, और ये भाग्यशाली मानती हूँ कि जीवन में एक ही मौका मेरे हाथ में आया कि मैंने लता जी के साथ मोरनी गा लिया. तो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होता है, मुझे हो गया. मैं बहुत नाचीज हूँ बेसिकली. मैं तो थिएटर करती हूँ, गाना उनको लगा कि मैं गा सकती हूँ तो मैंने गा दिया.
But even your theatre, you used a folk idiom. You too did theatre that was rooted in India. No? बिल्कुल। और हमने 40 साल हमारे थिएटर सुरनाई के मना लिए हैं, और फोक और जिसको कहते हैं कि सुरनाई एक दूसरा परिवार है जहाँ पूरे भारत से लोग आके रहे हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है, एक प्ले हुआ था कश्मीर की फोक को इस्तेमाल किया हमने, एक प्ले हुआ था राजस्थान की फोक को इस्तेमाल किया। अगर बात कहने में फोक का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ तो मैं मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ। And why should you? जी, it adds to the whole thing. True. It's said that while Indian commercials started out aping the West and trying to do things that were like what, Madison Avenue or Soho, we now have an idiom of our own. When we make our ad films, we make our own points, we have our own style, we reach out, as your brother just said, to a much wider audience, and yet we're not exactly Bollywood in our style. It's a very distinctive idiom of its own in Indian advertising. How did that develop? I think part of the answer Piyush already gave, when you realized you have to reach out to the rest of the country, तो फिर उनकी भाषा में बोलना अपने को. But you could just have done Bollywood, no? But you guys developed a different idiom. Yeah, so we, Bollywood is a very sanitized and airbrushed, world view of India. We were concentrating on what is real India, and people, we feel people connect better with that. If I show here, and we found the right clients in that moment, because I remember when we were doing the first Fevicol Egg film, and I said, यार वो Carpenter जो है ना, तो Carpenter जितनी भी casting तुम मेरे को दिखा रहे हो, वो उसमें से कोई Carpenter लगता नहीं है, because इसकी skin tone is not telling me he has seen life, Okay. So all of us are living in air conditioning, and it makes our skin completely uninteresting to me as a filmmaker. Yeah. And so I chose a guy who was only supplying junior artists, but he has been roaming around in the streets, taking all the sun. So उसके चेहरे पे एक back story आती है. Yeah. Now, till then, I remember before we did that to Fevicol, I remember one Elpar commercial, मेरे ख्याल से विलासी था उसमें, ठीक है. But then later on I saw a Nerolac commercial where a painter is the same model who is doing Elpar shootings. Okay. तो वो डंगरी पहन के आता है. डंगरी पहन के तो अपने घर पे पेंटर आज तक नहीं आता है. Okay. So I said कि यार ये एक ऐसा आदमी लेते हैं, उसको हीरो बनाते हैं हमारी फिल्म का. And the client was brave enough. He said, I agree with you. Till then, clients would say, no, he's not good looking. No, Carpenter doesn't have to be good looking. Yeah. Carpenter has to be, and we found a great client for SBI Life, because I said, वो old lady और उनका husband, वो एक magic होगा if we find a real couple. So we tested around and all that, and once we found a couple, then the client, for a moment, he said, yaar wo, she's not that great looking, but she doesn't have to be great looking for us. As long as her husband loves her, that's great. And that chemistry I can see. And that was a great client, because he said, okay, you got a point. So you had brave clients who were experimental in their approach, and when people saw the success of that work, then they opened out and they say, yes, why not do real casting? And that's when things began to change. Yeah. We've talked about the fact that you guys came into Bombay and you started working at a time when India was changing, when media was becoming more mass than it had ever been, and it was reaching more people, and the sort of elevated, slightly stilted, bubblish kind of communication that we specialized in till then changed. You guys have all taught us how to do it, all three of you. You've been at the forefront of this change, which is why I think it's important when you say the idea of India is the idea of its people. You guys have reached the people. I want you to look ahead. What is going to happen in the next 10 years? What should we be looking at? I think the people in this room
all of us, me included, जितने भी मौके मिले ना, expose your children to India. Give them an opportunity to respect. अगर वो destination weddings भी होती हैं, तो it's not the only thing is the fun bit. There can be a lot of fun bits. Travel India a little bit. I think that's where the respect will come. I still remember, I now look back, at that time I didn't realize, but that is the truth. That's what we need. When my boss actually pushed me, and he went to bigger writers, I was a nobody. And that's when I wrote Mile Sur Mera Tumhara. Okay. That's what we need today. Yeah. If we believe in Mile Sur Mera Tumhara, to Sur Bane Hamara, I think that's what we need. We need to expose them. So true, no? So true. I think it's the exposure. It's the exposure. These are bright kids. They are wonderful. But if we don't expose them to the beauty of what this country has, they would miss a chance, and we would miss a chance. Ilaji, would you agree with that? मैं बिल्कुल एग्री भी करती हूँ और अपनी तरह से कोशिश भी करती हूँ. क्या होता है कि बहुत सारे एल्बम्स निकले, पर कुछ गाने प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ गाने जो है लोग सुनते नहीं. एक गाना मैंने किया था, कुछ भी बोलो मगर प्रेम से, 9 लोक गीतों को उसमें डाला था. कहने का मकसद ये कि अगर हम ट्रस्ट करें, अगर हम एक दूसरे को समझें, तो भारत की ताकत जो है ये एकता में अनेकता और विविधता. तो हमारे पास सब कुछ है. ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट और हमें उसको उसी को इनकैश करना, वही आइडिया है कि सब मिलकर चलें, एक छतरी के नीचे रहें, प्यार से. और कितना है, पहाड़ से लेकर समुद्र तक हमारे पास ज्योग्राफिकली भी है, रेगिस्तान हमारे पास है. और जहां मुझे मौका मिलता है, क्योंकि ये अपनी बात 30 सेकंड में कह देते हैं, मैं अपनी बात 4 घंटे या 3.5 घंटे में कहती हूँ. नाटक करती हूँ तो भी फैला देती हूँ, गाने गाती हूँ तो भी फैला देती हूँ. पर मकसद ये अलग अलग चाहे हो. आई थिंक सोच राजस्थान से मिलिए, सोच फैमिली से मिलिए, क्योंकि हमारा खुद ही पांडेमुनियम रिपब्लिक हो चुका है कि इतने लोग घुस चुके हैं, हर मजहब के लोग हैं. तो एकता में एक अनेकता भारत की ताकत है. और मैं सोचती हूँ कि हमारे युवा बहुत, उनको हम प्रेम सिखाएं, ट्रस्ट सिखाएं एक दूसरे पे, डरे नहीं. ये जो कुछ भी हो रहा है, हमेशा लोग कह रहे हैं हमें बहुत डर है, हमें बड़े. किस बात का डर है यार? कौन किसको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और होनी चाहिए. अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगी तो फिर घुट घुट के आदमी रहेगा. तो मेरा आइडिया ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, युवा के पास नौकरी हो, युवा आगे बढ़े, ट्रस्ट करे और भारत खिलखिलाए. दैट्स व्हाट आई से. That's great. Looking ahead, you guys, as I said, you were at the forefront of a change in India. You were at the forefront of a way of communicating. The brilliant example you gave, you showed us that real people on screen were much better than these airbrush people when it came to connecting. What lies ahead? What do you see for the next 10 years? Actually, I don't have the slightest clue. Really? Okay. And also, I feel culture is not a fixed space. Yeah. It's an ever-evolving piece. So the next generation will have to look around at what is available now, and enjoy it. I think if you enjoy and appreciate what is around, you'll be able to observe much better. I think my greatest strength as a creative guy is that I'm a good observer. Okay, because ideas, like I said, they don't come from here. You watch something, you connect something to something. Okay, and I think if the next generation just remembers this, that we are so blessed. Oh, holy Christ, you can't believe how blessed we are that we are born in this country, because for a moment, if you were to believe that there is afterlife, and in your next life, I don't mean to demean any other country, but for heaven, for God's sake, if you were born in Sweden, and if there was a way of remembering what you had here, you'd really, repent. Ki yaar, I did not watch enough. This is like all of Europe put together multiplied by 10. Okay, there is so much around me. If you do not observe, you have missed. Holy Christ! I mean, you missed
an unbelievable experience. So your next life and the life after that, the life after that. I'd like India, right? right here, right here, always. 1,000 lifetimes in India. I think some things won't change, Veer. Let me give you an example. Will generosity change? And I'm asking this question to the audience here. Will the concept of generosity change? I don't think generosity will change, but the ways of expressing it will change. The work done by youngsters at Ogilvy, that's the company I work in, they did the Shah Rukh Khan ad for Cadbury's, where he's talking on, he's promoting the retailers, small retailers who cannot afford advertising, but the usage was AI and deepfake. Generosity did not change. We don't have to change. Will your love for your child change? No. Your expressions will change. Will your love for your mother change? Nothing will change. So, accept the universal truths, embrace the new things, but express the same things. That's what I think. Who could have said it better? You guys are a remarkable family. I can't think of anybody who so quietly, without drawing attention to themselves, has been at the forefront of so many changes in communication and popular culture. It's been a privilege to talk to you guys. Thank you. Next time I'll ask you about how to taste food and say things about them. Thank you all for your time. Thank you so much, and if I can just request you to please be seated. ईला जी, बहुत अनुरोध है ऑडियंस की तरफ से कि आप मंच पे हैं और आप कुछ गाएं नहीं तो ये थोड़ी जास्ती हो जाएगी। कभी I was waiting for that. अब तो गाना ही पड़ेगा। एक सेकंड, अगर तेंदुलकर साहब आते हैं, आप कहते हैं कि बैटिंग करो यहाँ? I mean, साजिंदे नहीं, ताल नहीं, सुर नहीं, मैं क्या गाऊंगी? पर मैं चाहूंगी छोटा सा गुनगुना दूंगी आपके लिए, पर दोनों भाइयों को सहयोग करना पड़ेगा। एक मैंने गाना लिखा था, वोट फॉर घाघरा। तो कहानी बहुत छोटी सी थी कि ईव टीजिंग का जमाना चल रहा था, लोग गरीब लड़के, आज भी चल रहा है, लोग कहीं रेप्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो हम अपनी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि कला के माध्यम से कैसे कहें कि ये सब गड़बड़ है। तो मैंने वोट फॉर घाघरा एक गाना लिखा था, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमिया। अब पूरे लोग तो नहीं, सबने घाघरा घूमा क्योंकि चोली के बाद आया था ना, तो उन्होंने सोचा कि कुछ होगा इसमें भी। अरे भाई, चोली के पीछे भी एक अच्छी बात थी कि चोली में दिल है मेरा। और घाघरे की बात जब है तो घाघरे में उलट पुलट बातें नहीं है कि दिल्ली शहर में घाघरा, एक गरीब लड़की है, गांव में पैदा हुई, उसको एक मंत्री के लड़के ने छेड़ा, बात दबानी चाह रहे हैं लोग कि दब जाए, पर लड़की में ऐसा जोश है, वो कहती मेरा ये घाघरा वस्त्र नहीं है, मेरा घाघरा अस्त्र है, और वो घुमा देती है। फिर प्रेस वाले भी मुग्ध हो जाते हैं, फिर मीडिया भी पागल हो जाता है, फिर यहाँ तक कैसे हो जाता है जैसे फूलन देवी बनी तो वोट फॉर घाघरा हो गया, यानी कि उन्होंने देखा ताकत है, वोट फॉर घाघरा ऐसे। तो भैया तुम लोग थोड़ा साथ देना, गाना याद नहीं है, गाना अगेन बहुत लंबा है, मैं छोटा सा गाऊंगी। घूमियो 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 कहना प्लीज। और पहले मैं काई हो फिर तू काई बोली, तीन चीजें गलत मत करना। पीयूष ज्वाइन। दिल्ली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूमियो, उई सब मर गया रे मारो घाघरो जो घूमियो, घूमियो। थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पकड़ी जो मेरी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा गणवाया, मैंने मारी लकड़ी, उन्हें मूछा घमाई, मैंने आंखें दिखाई, फिर काय होए हो, फिर काय होए हो, और दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा, दूंगी मैं थने ऐसा धचका, दूर हट जा रे फिर दिल्ली शहर मेरे मारो घाघरे जो घूमियो, उई सब मर गया रे मारो घाघरे जो घूमियो, सीटी सर बजाते पुलिस दौड़ी चढ़ी आई, कंगन मारा उतारा, हथ कड़िया पहनाई, थानेदार के आगे फिर मैं मुस्काई, मैंने दियो धचको, उन्हें खाया लचको, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढ़ी हुई, थानेदार की अकल थोड़ी सी घबराई, फिर मैंने कहो तू काहे बोली,
अरे दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा, दूंगी मैं तने ऐसा धचका, दूर हट जा रे पेरा, गली सवार मर घाघर जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो। और उसके बाद गाना बढ़ता जाता है और बाद में आता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ। इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे कई औरतों को मिलेंगी, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ, वोट फॉर घाघरा, वोट फॉर घाघरा, वोट फॉर घाघरा। तो ये औरतों की बात। लीला जी, घाघरे की बात हुई है तो चोली की बात की जाए। अगर घाघरे की बात हुई है तो फिर चोली की बात भी हो जानी चाहिए, नहीं? चोली मेरा राइट नहीं, टिप्स आ जाएगा, मुझे फट से पैसे मांगेगा। आपको मालूम नहीं है, गाना गाते हैं तो पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो सीक्रेट है, पर जब गाते हैं ना तो यहाँ बैठे होंगे एक दो, वो कहते हैं ने गाया है, फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। So I can't sing. But thank you for being so graceful and ladies and gentlemen, you know, आजकल ये क्रिएटर इकोनॉमी की बात होती है, ये भारत के ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं and they brought the earthiness of India to us through their creativity, through their craft. We're truly privileged. Thank you for your contribution and thank you for giving us these iconic pop culture moments. एक बार फिर से काफी historic panel रहा है ये. Thank you. Having the family together here. अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अपूर्वा सरकार, हेड मार्केटिंग बंधन बैंक, to please join us on stage and felicitate these legends of Indian media, advertising, music and writing. Can we get the mementos on stage, please? Arun, ladies and gentlemen. Thank you so much, ma'am. पीयूष पांडे जी के लिए तालियां। And thank you so much as well, Persoon ji, for being here. Thank you very, very much. And thank you, Mr. Sangvi, once again. Thank you very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as we wait for our next guest to arrive, I think this is the perfect time to once again express our gratitude towards our wonderful partners who've been so supportive, starting with Dabur Vedic Tea, our co-presenter, co-powered by Rajesh Masale, Bandhan Bank and Gallant Group of Industries. Our partners, Ashpura Gems and Jewels, Tata Power, Relly Spray, Tata AIG, Jindal Steel, Tata Capital, Mahara and MMRDA. Our knowledge partner is Sharda University, wellness partner Shuddhi Ayurveda, state partner Uttarakhand Shasan, Uttar Pradesh Sarkar, associate partner Himalaya and digital partner ABP Live and Uncut. एक बार तालियां हो जाए. Well, the evening is warming up. We've had a wonderful session और एक बहुत बेहतरीन अभिनेत्री हमारे बीच अब आने वाली हैं कुछ ही मिनटों में. We're just waiting for the iconic Kareena Kapoor Khan to arrive in a matter of few minutes. Ideas of India, yeah, ideas of India. ABP Networks, ideas.